In these deep wells lies a profound entryway to restoring Seedhi's landscapes in the central Indian state of Madhya Pradesh. Forests and agriculture are lifelines for the majority of Seedhi's population. जितना जंगल घना रहेगा उतना बारिश होता है हमारे यहाँ। अगर जंगल कट गई तो न लकड़ी मिल पाएगी, न बारिश, न खेती हो पाएगी। Vulnerable to climate change, this remote district finds itself entangled in a web of land use challenges. Whether it is forest area or outside the forest area, the involvement of the local people and their association, that becomes very important. Now that is why where the activities which are being already undertaken under the livelihood mission will lead to the convergence of the government scheme for the single objective of improving both the environment as well as the social and economic development of the individual and the community. सीधी जिले के अगर पूरे इकोनॉमिक अगर सिनेरियो को देखें तो मोस्टली रूरल इकोनॉमी है, इसमें एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। तो ऐसी स्थिति में लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर अल्टरनेटिव फार्मिंग पैटर्न को अगर हम डेवलप कर सकते हैं और साथ साथ जो फॉरेस्टेशन की प्रक्रिया है तो इसके भी दोनों तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं। The people of Seedhi are now filled with hope, envisioning a brighter future. WRI India's assessment has shown that Seedhi holds the potential to restore 300,000 hectares of land that could spark more than 3,000 micro-enterprises, creating employment for 30,000 individuals, particularly the most marginalized. इंटीग्रेटेड वे में करने के लिए कोलैबोरेशन इज मस्ट। किस तरीके से टेक्निकल इनपुट हो, साइंटिफिक उसमें मेजर्स लिए जाए, ये कहीं ना कहीं टाइम के कारण और स्पीड के कारण हम लोग लैग करते रहे। Prioritizing the needs of the locals, the Seedhi Landscape Restoration Project is a collaborative effort by the communities of Seedhi, WRI India, Seedhi's district administration and local partner Action for Social Advancement. Initiated through watershed management in the pilot cluster of villages in Seedhi, restoring its landscapes can strengthen the flow of ecosystem services for its people through locally viable tree-based interventions such as agroforestry models like Vadi and trees on bunds on private lands and bamboo plantations on forest and private land, along with sustainable agricultural interventions such as nutrition gardens and improved crop varieties. जंगल से बहुत बड़ा संबंध है, तो हम लकड़ी बांस से हमारा पालन पोषण हो रहा है। अभी बांस कटा है तो बहुत अच्छी रेट में बेचा है। Incentivizing local community members with well-established market linkages for non-timber forest produce further ensures protection and expansion of area under restoration through local efforts. के पहले यहाँ के किसान जो है खेती नुकसान हो जाता था तो बहुत लोग डर के वजह से लगाते भी नहीं थे सर, लेकिन अब जो है अब वो सब करेंगे सर, तो इससे फायदा होगा उनको। अब आराम से खेती बाड़ी करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे, उनकी स्थिति अच्छी मजबूत होगी। Strengthening sustainable agricultural practices in the region is leading to healthier farmlands and enhanced farm productivity, benefiting people with better incomes and improved nutritional security. जैसे कि 7 सब्जियां उगाती हैं दीदी, तो मतलब 7 सप्ताह होती है। हाँ, तो एक सब्जी एक दिन खाया करती हैं बदल बदल के। Showcasing a roadmap for scaling landscape approach to restoration with local communities across India, Seedhi demonstrates that we can protect, sustainably manage and flourish in harmony with nature.